Page number 67. The egg of your English Balbharti textbook. So today we are going to learn one new lesson from English Balbharti textbook, page number 67. Lesson number 3, the egg. Baby parrot lived in a nest with mummy and a big white egg. I am going to find some food, said mummy one day. So what we can see in this picture? We can see that there is one egg, and near the egg we can see that there are two parrots. One is mummy parrot and the other one is baby parrot. Mummy parrot is big and baby parrot is small. So there was one baby parrot, and that baby parrot, he used to live with his mummy in the nest. So baby parrot and his mummy, they used to live in a nest, and they were also having one big white egg. So one day mummy was telling that I am going to bring some food. So baby parrot and mama parrot, they used to live in the nest. वो लोग कहाँ पे रहते थे? Nest में. And they were also having a big white egg. उनके पास क्या था? एक बहुत big white egg. So our mummy tells us now that I am going to the market. I will get you some snacks. I'll get you some chips. ऐसे हमारी मम्मी हमको बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ. तो same way mummy parrot is telling that I am going out to bring some food. You must look after the egg until I return. Mummy is telling that I am going outside, but you have to look after the egg. मैं बाहर जा रही हूँ लेकिन आपको घर पे रुक के एग का क्या देना है? ध्यान देना है. You have to look after the egg. Now what is baby parrot going to do? Baby parrot क्या करेगा? That we will read in the story, so that we will come to know what the baby parrot is going to do. Baby parrot watched the egg for a very long time. She moved it around to make sure it was comfortable. She wrapped her wings around it to make sure it was warm. So now, when Mama parrot went outside, baby parrot was sitting with the egg. And what baby parrot was doing? Baby parrot was sitting and watching the egg. Baby parrot बिना आवाज़ किए बहुत क्वाइटली गुड गर्ल की तरह चुपचाप बैठी थी, एग को देख रही थी. बेबी पैरेट वॉज सिटिंग लाइक अ गुड गर्ल एंड शी वॉज लुकिंग आफ्टर द egg. Now see here in this second picture how that baby parrot is giving a hug to the egg. Baby parrot कैसे egg को hug कर रही है अपने wings, जो baby parrot के wings है उसे वो किसे hug कर रही है? Baby parrot egg को hug कर रही है, उसे बहुत प्यार कर रही है. She is caring for that egg. I am very good at looking after eggs, she thought. So baby parrot is telling that I am a good girl because I look after eggs. अगर आपको मम्मी ने कुछ काम बोला तो आप कैसे बोलते हो? वाओ, मम्मी ने मुझे काम बोला, मुझे ये सब काम आता है, इसलिए मम्मी ने मुझे ये काम. Now baby parrot is telling that I am very good after looking eggs. अभी बेबी पैरेट को लग रहा है कि बेबी पैरेट तो बहुत स्मार्ट है एंड शी इज़ वेरी गुड बिकॉज शी इज़ लुकिंग आफ्टर द एग. जस्ट देन शी हर्ड द monkeys प्लेइंग इन द ट्रीज. बेबी पैरेट tried to call like a monkey too. Now baby parrot was inside the nest. What happens next? She heard that the monkeys are playing outside on the trees. So baby parrot, she makes the sound like a monkey. वो monkey की तरह आवाज़ निकालता है.
जो छोटा बेबी पैरेट होता है वो कैसे आवाज निकालता है? शी मेक्स अ साउंड लाइक अ मंकी. शी peered over the edge of the nest and laughed at their games. Means she went near the door of the nest. जो नेस्ट का एंडिंग था, अभी हमारे घर को कैसे एंडिंग में डोर होता है वैसे सेम वे नेस्ट का जो एंडिंग था वहाँ पे बेबी पैरेट शी वेंट देयर एंड शी वॉज स्टैंडिंग and looking that how are the monkeys playing, and she started laughing at their games. Suddenly baby parrot remembered the egg. Now what happened? Baby parrot was busy watching that how the monkeys are playing. Baby parrot तो busy था देखने में कि monkeys games कैसे खेल रहा, monkey game कैसे खेल रहे हैं. So when she was watching she remembered that शी हैव टू लुक आफ्टर द एग. वो तो भूल ही गई थी कि उसको एग्स का ध्यान देना है, उसे याद आ जाता है दैट शी हैव टू लुक आफ्टर द एग्स. सो शी टर्न अराउंड एंड शी गल्प. मीन्स शी स्टार्टेड वॉचिंग दैट हाउ द एग इज देयर, द एग इज देयर और नॉट, हाउ इज द एग, वो सब ये बेबी एग देखने लगी. शी स्टार्टेड लुकिंग दैट व्हाट द एग इज डूइंग. It was broken. Mummy would be very angry. But when Mummy returned, she wasn't angry at all. Baby parrot did not touch the egg, but she don't know how the egg was broken. Baby parrot को तो पता ही नहीं egg को क्या हुआ और egg अपने आप से टूट गया. And baby parrot she became very afraid that mummy will come home and she will shout. अगर आप भी ऐसे कुछ गड़बड़ करते हो घर पे तो आप डर जाते हो कि अरे अभी मम्मी आएगी और हमें डांटेगी कि आपने ऐसे क्यों किया. सेम वे बेबी पैरेट ऑल्सो बिकम फ्राइटेंड एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट मम्मी विल कम एंड शाउट मी. बट व्हेन हर मदर केम होम शी डिड नॉट शाउटेड एट द पैरेट. शी वॉज नॉट एंग्री. मम्मी वॉज नॉट एंग्री. मम्मी सेड दैट डोंट वरी, the eggshell is broken because the little parrot is going to come out. eggshell टूटा हुआ है क्योंकि लिए बेबी पैरेट का बाहर आने का टाइम हो गया है. the baby parrot is going to come out of the egg. that's why the egg is broken. the egg has hatched while I was away. now you have got a new baby sister to play with. Now mummy is telling that when I went outside to bring food, at that time the eggshell has broken. It has hatched because the little baby sister is going to come out. Now mummy is telling that you got a new baby sister with whom you can play. So now baby sister is having one small little sister to play. So mummy was not angry. मम्मी बता रहे कि जब भी मैं बाहर गई थी तभी एग थोड़ा सा टूट गया था. इट हैज हैच्ड. वो थोड़ा सा टूट गया. उसके अंदर से कौन बाहर आया? लिटिल बेबी पैरेट. बेबी पैरेट की और एक छोटी सी सिस्टर बाहर आ गई. सो दिस वॉज द लेसन द एग. सो टुमारो वी विल लर्न द न्यू लेसन.